एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी लिखाया बताया कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो किसी भी एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने का दमखम रखते हैं, ताकत रखते हैं और एक रिस्क बियरिंग कैपेसिटी में रहते हैं, है ना। को ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। वो यूनिट देख लेता हूँ, 1 मिनट। वो वाला यूनिट तो कंप्लीट कर दिया था मैंने। यूनिट 1 मैडम ली थी और हमने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर रोल और एंटरप्रेन्योर यूनिट 4 मैंने स्टार्ट किया था। ग्रोथ ऑफ इनोवेटर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है एंटरप्रेन्योरशिप से, है ना। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन ओवर व्यू ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सर्च ऑफ ए बिजनेस आइडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना। ये है यूनिट 5, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सर्च ऑफ ए बिजनेस आइडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीजें यूनिट 5 में है, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक आज हम आपको बताएंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। एक प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू डिसाइड अपॉन ए प्रोजेक्ट। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये है के लिए है ना, द राइट प्रोजेक्ट सेलेक्ट विल लीड एन एंटरप्राइज टू ग्रेट सक्सेस। एक सही अगर आप प्रोजेक्ट ये करते हैं तो आपका 100% चांस हो जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल बन जाएगा। The right project select will lead an enterprise to a great success, while the wrong or infeasible project will lead to the complete downfall of an enterprise. Hence, a project is the foundation stone of a venture. A project generally has been identified as any program of action. Thus, there are research project, agriculture project, sub-project, and project related to market, equipment, technology, production, location, etc. There are different types of projects are available. In the management concerned, the main project and the fine project will be selected by the person. Definitely he will achieve their target. Otherwise, the wrong project or infeasible project means ऐसा project जो feasible ही नहीं हो ही नहीं पाएगा। पैसा में आप पूरा लगा दिए हैं, तो पूरा वक्त पैसा, तो फिर पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। In the precise sense, a project proposes commitment to tasks be performed
with well-defined objectives, scheduled, and budget. It can be defined as scientifically evolved work plan devised to achieve a specific objective within a specified period of time. Taken in this perspective, while project can differ in size, nature, objective, and complexity, they must all partake of three basic attributes of being a course of action, of having a specific objective, of involving a definite time perspective. Okay. Management scholars emphasizes that a project is a unique and non-repetitive activity which aims at systematically coordinating inputs in the direction of intended output. The Encyclopedia of Management defines a project as an organized unit decided to the attainment of goal, the success completion of development program, a specification. Okay. A project is an organized unit dedicated to the attainment of goals, the successful completion of a development project on time, within budget, in conformance with predetermined program or a specification. So, students, these are the some definition regarding the project. Now, how to analyze and how to identify your project. So, project identification is concerned with the collection, compilation, and analysis of economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment and with the development of the characteristics of such opportunities. यहाँ तक तो बात हुई कि प्रोजेक्ट होता क्या है. प्रोजेक्ट का मतलब ये है यहाँ पर एक आम सरल भाषा में कि प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर जो बात हो रही है, प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दी क्या है कि आप जो भी पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, है ना, बड़ा बड़ा कैपिटल आप लगाने वाले हैं, ह्यूज कैपिटल आप लगाने वाले हैं, इट मीन्स दैट कि भाई उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिससे लगाने के बाद मुझे प्रॉफिट हो और वो फिजिबल हो. समझ रहे ना. तो प्रोजेक्ट है ना, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे. दीज आर द मेन पर्पसेस ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लान. फिजिबल मीन्स कि भाई जो भी हम प्रोजेक्ट में लगाने वाले वो फिजिबल हो. ऐसा नहीं कि हम लगाए और वो पॉसिबल ही नहीं हो सका, तो फिर क्या होगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा. पूरा पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, टाइम बर्बाद. तो प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, इट इज द मेन टास्क ऑफ ए मैनेजर, है ना, या एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर को एक परफेक्ट प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना सबसे कंपलसरी हो जाता है. बात समझ रहे ना. तो प्रोजेक्ट ऐसा हो कि भाई वक्त पे पूरा हो जाए, पैसा जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो मेरा रिटर्न भी सही से आ जाए, उसका परसेंटेज भी सही हो, है ना. तो उसके लिए तो इनोवेशन होना चाहिए, है ना. और अच्छे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में जोखिम है, तो जोखिम उठाने वाला हिम्मत भी होना चाहिए. ये भी मेन बात है. समझ रहे ना. तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है is concerned with the collection, compilation, and analysis of economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment with the development of
The characteristics of such opportunities. अब यहाँ पर क्या opportunities according to the Drucker in 1955 are three kinds of opportunities: addictive, complementary, and breakthrough. Addictive opportunities are those opportunities which enable the decision maker to better utilize the existing resources without in any way involving a change in the character of the business. Complementary opportunities involve the introduction of new ideas as such do lead to certain amount of change in the existing structure. And the last point, the breakthrough opportunities, on the other hand, involve the fundamental changes in both the structure and character of business. अब प्रोजेक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? Project objective is an important element in the project planning cycle. Project objectives are concerned with the defining in a precise manner that the project is expected to achieve and provide a measure of performance for the project as a whole. Objectives are the foundation of which the entire of the project design is built. The essential requirement for project objectives are: number one, a specific, not overly complex, measurable, tangible, verifiable, realistic and attainable, establishing established within a resource bound, consistent with resources available or anticipated, consistent with organizational plan. These are the some project objective. One by one फिर से मैं बोल देता हूँ. A specific, not general. दूसरा, not overly complex, not overly complex. Measurable, tangible, measurable, tangible, and verifiable. Next, realistic and attainable. Realistic and attainable. Okay. Established within resource bound. Established within resource bound. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे what are the components of project management. There are several components of the project management. Project planning, monitoring and control. This is the first point. Pre-investment activities planning, procurement and contact management, quality assurance, cost engineering and budgeting. These are the some components. And objective of the project is promotional objective, balancing objective, modernization objective, replacement or management objective, expansion objective, and diversification objective. जो प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम प्रोजेक्ट कोई भी तैयार करेंगे? नंबर वन, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव. अगर हमको अपने कंपनी का प्रमोशन वगैरह करना है तो एक प्रोजेक्ट के तहत बनाएंगे. नेक्स्ट, बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए. मॉडर्नाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अगर कोई भी चीज को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनेगा. रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, replacement and management objective. Expansion objective, if a company wants to expand their business to the
other places or expand their business or market and product differentiation, each and everything. If they want to expand, then definitely he will make a project. Okay, तो प्रोजेक्ट का तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? द एंटरप्रेन्योर शुड आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज or project before launching a new business. After identifying the project, the appropriate project should be selected from among the alternative projects. Before selecting the project, the idea relating to the project should be cleared. In fact, new ideas are based on significant scientific breakthrough. However, most of the project ideas related to combining existing technologies or to present new type of existing product or services. One of the methods of creating ideas is like this: any person having a special technological or technical knowledge or creating ideas, marketing expertise, or any other competencies feel that the product or services can be produced to fulfill the wants not fulfilled at present. His ideas is accepted by the colleagues. They encourage him and also show the willingness to participate. The financial institution also agreed to provide him finance. Eventually, he initiates the business. So, there are the creating and identifying good project idea may be explained in this way. Analysis the performance of existing industries. सबसे पहले जो एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रहा है उसको एनालाइज करना है. Examine the inputs and outputs of various industries. Input और output various industries का पता करना है. Reviewing import and export का रिव्यू करना है. Study plan outlay and government guidelines. गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइंस को देख लेना है. Look at the suggestion of financial institution and development agencies. जो प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सजेशन ले लेना है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज. जिस जगह पे प्रोजेक्ट बन रहा है या बनाने वाले हैं हम लोग वहां का लोकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज देख लेंगे. एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेंड. और सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में पता कर लेंगे. स्टडी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. किस तरह का न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसके लिए भी देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई भी एक हाथ उठा लो. ओके. ड्रॉ क्लू फ्रॉम कंजम्पशन abroad. Explore the possibility of reviving sick unit and identifying unfulfilled physiological needs. ठीक है. तो these are the some project identification ideas, है ना. क्या था? एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज. जो करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हम लोग देखते हैं. एग्जामिन द इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज. उसके कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट्स हैं उसको एनालाइज करना. रिव्यूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रिव्यू करना. स्टडी प्लान आउटले एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस. गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को समझना देखना. लुक एट द सजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से क्या क्या सजेशंस हैं उसको देखना. इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकल मटेरियल एंड रिसोर्सेज. हमारे जगह पे कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लोकल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज क्या क्या मिल सकता है. एनालिसिस ऑफ द सोशल ट्रेंड एंड इकोनॉमिक ट्रेंड.
Study new technology development. Study the new technology development. ठीक है? So these are the some sources of creating and identifying good project idea. है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे testing criteria for a project identification. Testing criteria for project identification. At the time of investment decision, the entrepreneur is required to make concerted effort to assess the social and economic cost and profitability of the project with the help of social cost benefit analysis technique. Projects are accepted or rejected many a time on the basis of economic viability, assessed on the basis of application of accounting prices, premium of foreign exchange, shadow wage rate, etc. But at the identification stage, projects are identified mainly on the basis of felt need or technical feasibility or financial viability. Moreover, it would be better to examine the following issues in detail with regard to project identification: the organizational structure and the nature of project planning capability to be developed by the entrepreneur, what analysis need to be undertaken at the identification stage, how and to what extent the use of social cost benefit analysis, which is also called SCBA, should be used at the identification stage, whether some guidelines should be provided for undertaking necessary studies, and how to ensure the availability of shelf of the project for the concerned objective. So this is the testing criteria for project identification. So testing में the entrepreneur is required to make concerted effort to assess the social and economic cost and profitability of the project with the help of social cost benefit analysis. Okay. तो ये हुआ आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल तो छुट्टी है, कल नहीं होगा क्लास. आप लोग नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट फ्राइडे को लेंगे और फिर इसी से कि डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट अभी से बता दे रहे हैं. डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, वो उस पर डिस्कस करेंगे. बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यू कैन लीव नाउ, वन बाय वन लीव कर जाइए. कुछ आप लोगों को हम ये भी डाल देंगे, क्या बोलते हैं, कुछ नोट्स जो है ना हमने तैयार किया है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे. सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, उसको थोड़ा सा देख भी लीजिएगा ताकि आप लोगों को सही भी लगे. ठीक है ना. ठीक है, आप ये कर लीजिए, एग्जिट मार लीजिए.